Okay, everybody. So, Assalamu alaikum. Today we are going to revise what vectors were. ठीक है? We studied yesterday. हमने कल इन vectors को पढ़ा है, and now we are going to see that what vectors were. So we studied that vectors are they are what physical quantities, and in physical quantities we have two types of physical quantities. The first one is the scalar quantities, and the second ones are the vector quantities. Scalar quantities they have only magnitude like time, mass, distance, but vectors they have magnitude as well as they have the directions. So, for example, it's a displacement and accelerations. Now we studied that what vectors are. So vectors are represented by the column vector. We can see that x and y in a bracket without any fraction thing. X is the horizontal axis movement and y is the vertical axis movement, and they are represented by a line over that. So AB with a line is a vector, right? Um, then we studied that how to find out the magnitude of a vector. So magnitude of the vector is equals to square root of x square plus y square. Like for example, a to b vector is given. AB vector 3 is x and y is minus 2. So 3 square plus minus 2 whole square is equals to square root 13, which is approximately equals to 3.6. Then I showed this diagram with the help of a diagram, and I say that if I want to go from A to B, like I'm here, according to this, it's three towards right. So I have to go three steps towards right and then two steps towards down. So that is what my B point is. So that's what we did in a graphical representation of the vectors. Like for example, then we studied about the vector AB, that if A to B is 3, negative 2, so if you want to go from B to A now, so you have to just reverse the signs. Look at that, the x component is now negative and the y component is now positive. Do you get this, everybody? Okay. If A to B vector magnitude of the vector is represented by two straight lines. If this is equals to B to A magnitude, so it means that magnitudes are same, but the directions are different. Is this clear? Now we can see that like we studied about a vector that A to C, like A is that point and C is that point. So I want to go till C, so I have to go three steps towards down, and then I have to take six steps towards right. So it would be 6 and minus 3, just because of this, that minus represents negative direction downwards. Is this clear? So after magnitude of the vectors, we studied that we can get a how which type of questions in that. So then we studied about this thing, that square root. Like for example, most of the students in exam, they what they do like for example 6 square plus q square, and they cancel square with the square root. That's a wrong technique. It's a bad idea. Okay, you cannot even write that like that. So you have to respect that this is also a wrong thing. Okay, so you have to avoid this error in the exam. Okay. Moving forward with the questions, then we studied about what equal vectors are. Equal vectors are of the same magnitude and direction, same magnitude, and when the directions are same and the magnitude is also same. We studied this, that O to A is equal vector of B to C, because in both the cases I have to go two up and three right. Is this clear? Murtaza, समझ आ रही है बेटा? जी सर समझ आ रही है। Okay, then we say that P to Q is 5 2 and P to Q is 5 2. So AB is equals to PQ because the magnitude is same, the direction is same. Negative vectors in place of the equal vectors is only one different. They have the magnitude same like equal vectors, but the directions are opposite. Agree? Like look at that, A to B vector and M to N vector. They both look same, the black lines, but the directions are different. So that is the reason we call them as a negative vectors. Okay, then what are parallel vectors? We should know that what are parallel lines. They have different magnitudes, but on same on opposite directions. So parallel lines, they never intersect. We should know that what parallel lines are. So you can see that O to A is parallel to B to C, but the direction is different. Is this clear? Is यस this सर। clear? So they're never gonna intersect each other. Okay? They are never gonna intersect each other. Now look at the right side. O to A is 2 1, C to B is minus 2 minus 1, but D to C is 4 2. If you compare O to A and D to C, you can see that
that the 2x component is 2, and but in that position that is 4, so that is double. And if it is 1, so that is 2. So it means that directions are also same and the magnitude is doubled. Agree? So we can say that D to C is double of OA. Okay, then we studied all this, and today we are going to learn the last part of the topic, which is addition of the vector. So in physics, you have studied this vectors in detail. अगर किसी ने physics नहीं पढ़ी तो अभी सीख ले. Addition of vectors. Addition of vectors. That how we add two vectors. Like for example, addition of vector is like for example, it is from head to tail rule. Okay, head to tail rule. Like for example, I'm going to draw two vectors here. Like for example, this is the vector like that. It is OA, and this line is A to B. So for example, if I want to add these two vectors, what I have to do, I have to join the head of the vector with the tail of another one. So for example, as you can see that this vector, if I move this vector from that position, and if I join this point with that thing, so this is now head to tail rule. Is this clear, everybody? Yes, sir. We can't join the vectors like in that position. Okay, is this clear? Is this clear? यस तो सर दोनों 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 तरीकों से सेम आंसर आएगा. सेम आंसर नहीं आएगा, दोनों तरीकों से आंसर गलत हो जाएंगे. ठीक है, so अच्छा सर. please pay attention to this. Like for example, Noor and Hoor, beta, please pay attention. Like for example, if I pick this vector and if I join this here, can you see that two heads are on the same spot? Can you see that Yes, two sir. heads are on the same spot? So that's mathematically wrong. So we have to join the head of the vector with the tail of another one. So that's the perfect position for this vector. So we should know that what is head and what is tail. So for example, let me draw a vector here. So position is the head of the vector and the position is the tail of the vector. So that is what head to tail rule is. Head to tail rule. Is this clear, everybody? यस सर. Yes or okay, Noor and Hoor. Sir. Noor and Hoor. Sir. Yes, Okay, sir. Noor, please focus. Like 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 for example, if my vector is like that and this is A, and examiner wants me to draw 2A, so it means that that would be the double of this vector. So what I have to do, I have to just draw a line which will extend that. Okay, wait a minute, guys. Okay, now it's fine. Assalamu alaikum, Hazim. How are you? Alhamdulillah, sir. Okay, जरा एक मिनट रुकता हूँ, मुझे सिर्फ ओपन हो गई है. Noor has left the meeting. There is some problem with the internet? क्योंकि मेरा इंटरनेट तो ठीक चल रहा है. बरीरा, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? Yes, sir. बरीरा, can you hear me? जी, sir. Okay, हूर नूर ने लेफ्ट हुआ हुआ है, जरा नूर को कहीं ज्वाइन करें. चलें, इतनी देर नूर आती है हम लोग ये देख लेते हैं. O to A vector is like that, you can see that. अब एग्जामिनर आपको कहता है कि जरा 2A वेक्टर ड्रॉ करें. आपको नजर आ रहा है कि O to A का डबल बनाना है, बस और कुछ भी नहीं करना. सो सो आपको पता है ये वन ब्लॉक है, सो यू हैव टू मेक टू ब्लॉक्स अवे. So that is the double of this vector. समझ आ गई आपको everybody? No, do you get this? No, sir. No, do you get this? Okay.
Yes, sir. So now, as I'm officially done with this vector thing, so for example, let's go towards the past paper questions. Let's check that whether we can do it or not. Okay, everybody, so please pay attention. Okay, this question is from October, November 16. It was in paper 2. So vectors past paper, right? So look at that. Now they say that A to B and A to B, B and OCD are straight lines. So ACB. So ACB like that. It's a straight line. Wait a minute here. Okay, एक minute. Okay, you can see that it's a straight line according to the examiner, and OCD is also a straight line. Okay, but we know this already. Okay, what straight lines are? Whenever we have a straight lines like that, so we know that there are vertically opposite angles involved. Agree? Remember? Remember Yes, that? sir. Okay. Now in this question, they say that A to C ratio C to B. A to C ratio C to B is 1:2. So for example, if I know that it is 1, so that would be 2, 1:2. Is this clear? Is this clear? Or Yes, sir. as I can say that, look at there that thing. इसकी तरफ जरा देख लें एक मिनट के लिए. एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा please. Okay. According to this line, Noor, A to C ratio C to B is 1:2. So we know this ratio, that 1:2 means that total are three parts. Agree? Total are three parts. And A to C is 1/3 and that is 2/3. Is this clear, Noor? Now Yes, they say sir. that express A to B in terms of A and B. Okay, that's fine. So A to B, like for example, now let me draw this an extra portion here. That is A, that is B. Okay, that A, that portion is O, and that line is something like that. So for example, we can see that in examination, this is 3A and that direction it is 6B. Okay, now I want to start my car from point A. This is the starting. This point is starting and this point is ending point. I want to start my car from A. I want to go till B. I have only one direction available in this question. We can see that already that I have to go from A to O and then from O to B. Is this right, everybody? Is this right, Yes, everybody? sir. Yes. So A to B का वेक्टर होगा हाजिम. ए से आपने पहले जाना है ओ पे हाजिम एंड Yes, देन sir. ओ से बी पे. राइट बरीरा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, बरीरा देख लें बेटा. अब जब ए से ओ आएंगे तो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वेक्टर यहाँ पे जा रहा है एंड यू आर गोइंग दिस वे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो साइन आपका आएगा -3a. इज दिस क्लियर? Yes, And sir. O to B is we are going from O to B, so it's the same direction. So that is the reason it is 6B. So the answer is -3A plus जी सर. 6B. Yes. सर ये आपने -3A इसलिए की क्योंकि लेफ्ट पे जा रहा है ना. हाँ, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. जी ओके सर, ठीक है. देखें यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो A है, लेकिन जब हम रिवर्स आएंगे तो वो -A होता है. अभी हमने पीछे नेगेटिव वेक्टर्स जी में. जी इज दिस जी क्लियर? जी सर. यस. ठीक है, वेक्टर इक्वली होता है लेकिन नेगेटिव होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है नी. जी. सो और नाउ वी सर एक हैव और द वेक्टर A to B. जी. सर ये 2/3 और 1/3 लिख के हम मतलब लाइक व्हाट लाइक ये हमने क्यों लिखा है सर? ये चूंकि इस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी वो अभी अगले पार्ट्स में इस्तेमाल होगी. ठीक है. ओके सर. ओके. Okay, now we know this that A to B, Hazim, we know this that A to B is now -3A plus 6B. Agree? Yes, sir. Yes or no? Yes, yes, sir. Okay, so Hazim, can you see that? Can you see that I have A to B available? Agree? So Yes, it will ratios be. के मुताबिक this it would be 2/3 of -3A plus 6B and 1/3 of -3A plus 6B. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो we'll get the same thing. Is this clear?
Okay, sir. Yes. यस और नो? Yes, मुर्तजा, sir. अब समझ आई आपको कि क्यों लिखा था? जी सर, समझ आ गई। Okay, now they say that express AC in terms of A and B. तो A to C आपको क्या नजर आ रहा है नूर? A to C is what? Noor. It's 1 by 3 minus Very 3a good. plus 6. 1 by 3 minus 3A plus 6B. The result is already there. Agree? But we have to multiply this 1 by 3 inside. So it would be 1 by 3 multiplied by minus 3 would be minus 3 by 3A plus 6B divided by 3. So I can perform some cutting here. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6. So that would be minus A plus 2B. बरीरा समझ आ गई बेटा? Yes, sir. ओके सो हूर आपको भी समझ आ गई बेटा? ये टॉपिक बहुत इजी है, अगर इसको सही तरीके से आप लोग कर लेना तो पेपर में गलतियां नहीं होंगी, ठीक है? ओके सो नाउ दे से दैट b to d is 5a minus b. b to d is 5a minus b. ओके b to d की वैल्यू है, कहता है कि ये है 5a minus b. ओके ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे एरो का निशान भी बना देते हैं, ठीक है? एरो का निशान भी बना दिया। ओके showing your working clearly that O to C ratio C to D, कि O to C और C to D की रेशो क्या आती है? पहले जरा O to C निकालते हैं हम लोग। This is O to C. So Hazim, can you see that O to C is this kind of a line? Agree? Yes, sir. I want to start my car. I want to go till C. I have two ways. मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं पहले B पे चला जाऊं और फिर C पे आ जाऊं, या मैं A पे जाऊं और फिर C पे चला जाऊं। Agree? तो मैं ऐसा करता Yes. हूँ, शॉर्टेस्ट रास्ता लेता हूँ O to A, Okay. O to A and then A to C. ठीक है जी, मुझे ये Yes. वेक्टर चाहिए। Yes, Is sir. this clear? Yes. Okay, तो so O to ये C वेक्टर वेक्टर, O to C का वेक्टर बताएं क्या होगा आगे? O to A ये क्या है? O to A 3A वेरी गुड, 3A प्लस, and ओके, plus A to A to C C 1 by 3 minus bracket minus 3A plus 6B. माइनस, वेरी गुड, जबरदस्त। अब इसको जरा करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। सो इट वुड बी 3A माइनस A प्लस 2B। ठीक है जी, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है। एग्री? Yes, So sir. that would be 2A plus 2B. Right, Noor? Yes, sir. Right. Okay, now it's time to find out CD. Okay, so Noor, now it's your turn. Tell me C to D. I want to start my car from C and I want to go till D. What should be the way? What should be the way? I You want to repeat? start my car from point, yeah, C2. Can you repeat? I want to start my car from C. I want to go till point D. What should be my way? D? Please repeat. Sir, C to D? Okay, so I want to car my start my car. Look at that position, please. We got this OC. Now it's time to check what is CD. So we want to go till point D. That is my ending and that is my starting. So if I start my car from point C, where should I go till to reach point D? Noor, Sir, Noor, C to D? beta, I want to go till point this D, but I cannot go directly. Agree? Because I have nothing available for C to D. Agree? Sir, which one is the line C? Look at that. That can you see this point C? Yes, sir. So, sir, C Uh, to B and then B to D. yeah, that's the answer. So C to D is equals to C to B plus B to D. So write that. So C to D is equals to C to B and then B to D. So Noor, can you see that C to B is already available, which is 2 by 3 minus 3a plus 6b. very good. So that is 2 by 3 minus 3A plus 6B, and B to D was given in the question. We can say that we can see that 5A minus B. Okay, Hoor,
Please multiply 2 by 3 inside. So it would be, make it quick. Hoor. It would be 2 multiplied by 3 is minus 6 divided by 3a plus 2 6 are 12b divided by 3 plus 5a minus b. We can perform some cutting here. At 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 ones are 3, 3 fours are 12. So that would be minus 2a plus 4b plus 5a minus b. Please do arrange the question. Question को जरूर arrange करें. So we can see that minus 2 plus 3 plus 5a is what? It is 3a, and 4b minus b is 3b. Now we have this thing 3a plus 3b. Get it? सर 3 कॉमन ले सकते हैं. So नहीं, अभी नहीं, देखें जरा. O to C वेक्टर हमारे पास है 2a plus 2b ratio, and C to D vector is 3a plus 3b. Agree? Now I'm going to take 2 as a common, so it is a plus b and it is a plus b. What is the ratio, G? सर 2:3. Very good. So it is 2:3. Barira, do you understand this? Yes, sir. So it is 2:3, and it was for 4 marks. So that is the reason we got 4 marks out of here. So that's how you have to solve few questions on vectors. So it will give you a lot of confidence. It is easy. It has no technicalities. You have to just remember one thing, that is that how you can tackle the concept. Okay. Okay. Look at the next question. It's from the past paper, and it's from past paper May June 2019. So Barira, please read the question slowly and gradually so that we can get the question. Okay. In the diagram, vector PQ is equal to 4P, QR is Okay. equal The to P, vector. Wait a minute. Wait a minute. Wait. Calm down. P to Q is 4P. Okay. Then. Q to R is 3Q, Okay. Wait a minute. We have U in between. तो U बीच में है, तो मैं यहाँ पे एक line लगा रहा हूँ. अच्छा. Q to R is what? It is 3Q, 3Q. ठीक है बेटा. Okay then. and P to T is P plus 2Q. Okay. P to T is given. Okay. तो यहाँ से एक line लगाते हैं खाली. ठीक है. And that is P plus 2Q. Okay. Then फिर क्या लिखा हुआ है? QU is equal to 2 by 3 of QR. Okay, कि Q to U जो है आपके पास, that is Q to U, it is 2 by 2/3 of QR. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay, if it is 2 by third, so that it means that U to R is 1 by third. Is this clear? Keep this in mind. Okay, then P to T is equals to 2 by 3 of PS. So it means that if this is 2 by 3, so that is 1 by 3. Right, Hoor? Right, Hoor? Yes, sir. Okay, Hoor. Now it's your turn. You have to express as simply as possible in terms of P and Q. We have to find out P to S. We have to find out P to S. And now we know this already, that this is P to Q. We have P to T. Now examiners want to start your card from P to S, and we have nothing available. We have P to T available. Can you see that? Yes, sir. We have to start our car from that point, and we want to go till that point. We know this, that this P plus 2Q is equals to 2 by 3. Yes or no? This P plus 2Q is equals to 2 by 3. Agree? Yes, sir. So P to S is equals to P to T plus T to S. Agree? Yes, sir. P to T is already given in the question, plus 2Q. We need to find out TS. Okay. According to the question, we know that 2 by 3 is equals to P plus 2Q, and 1 by 3 it is equals to X. We don't know about that what is this T to S. Is this clear, everybody? Ratio thing है. जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो it would be 2 by 3
x is equals to 1 by 3 times p plus 2 twos are 4, 4 by 3q. Is this clear, everybody? Sir, can you explain this question again? Okay, wait a minute. Okay जी, जरा देख लें जरा दोबारा, ये भी मैं मिटा देता हूँ। ओके, इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है तो आंसर हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा इरेज, ताकि क्वेश्चन जो है आप लोग पहले सॉल्व करें फिर आंसर्स को देखें। जो शीट मैं भिजवाऊंगा उसके अंदर आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ईसा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, फाइन। बेटा क्लास क्लास आपने कल भी ज्वाइन नहीं की, कल की रिकॉर्डिंग सुन लिया? सर कल मैं बाहर था पूरा दिन, अभी बाहर तभी घर आए हो, थोड़ा टाइम हुआ है। बेटा कोशिश करेंगे कल की क्लास में आपके पास पास पेपर होने चाहिए, ठीक है? सर बिन्यामीन को बोले, वो कह रहे थोड़ा वेट करो, कह रहे मंडे को आ जाएंगे, तो बेटा मैं स्कूल जाके देखता हूँ फिर। बेटा इस तरह है कि आप उनसे कंफर्म कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप ऐसा कर लें कि क्या नाम है, एमएस की जो वो है ना नहीं, मैंने एप्लीकेशन। उनको बोला है, उन्होंने कहा कि बस थोड़ा वेट कर लो वरना मैं वेलकम से ले लेता, लेकिन उन्होंने कहा बस 2 डेज वेट करो, आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। ओके, चलें जी, जरा क्वेश्चन देख लें ईसा, अगले क्वेश्चन से फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ये टॉपिक आपने वैसे भी मेरे पास दोबारा पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप देख लो, ठीक है? ओके, एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू। पी टू एस, हमें पी से गाड़ी स्टार्ट करनी है, वी हैव टू गो टिल एस, तो वी नीड दैट थिंग। ओके, एंड वी नो दिस दैट पी टू एस जाने के लिए वी नीड पी टू टी, हमें पी टू टी की जरूरत है प्लस टी टू एस की जरूरत है, राइट बरीरा? Yes, sir. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ये गिवन है हमें कि पी टू टी इज 2/3 ऑफ पी एस। इज दिस क्लियर? Yes. कि मतलब ये जो पी टू टी है दैट इज 2/3, सो ऑटोमेटिकली दिस पोर्शन 1/3 पी एस। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सो दैट इज द रीजन मैंने लिख लिया था कि दैट 2/3 इज इक्वल्स टू पी प्लस 2q, ठीक है? एंड 1/3 इज इक्वल्स टू x, हमें नहीं पता कि ये टी एस कितना आ रहा है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको। सो ये आता है 2/3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ p प्लस q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। सो वी नो दिस के 2/3 यहाँ से कैंसिल करके लेके जाएंगे तो वहां पर हो जाएगा 3/2। इज दिस क्लियर? सो x इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट p प्लस 2q मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसका जब यहाँ पर आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, एग्री? सो जी सर। वी कैन कैंसल 3 एंड 3, हम 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं। वी नो दिस दैट इट इज इक्वल्स टू 2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो p/2 प्लस 2q डिवाइड बाय 2, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है? हम 2 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये x जो है दैट इज व्हाट ts इज, एग्री? राइट नूर? तो वी नो what is p to t. P to t is given in the question, which is p plus 2q, and t to s is p/2 plus q, that is the thing. So p plus p/2 is p plus p/2। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। सो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो याद रखें ये 1 है और ये 1/2 है, तो ये होगा 3/2, ठीक है? 1.5 आएगा तो ये आएगा 3/2। अगर आप नहीं आता तो डिनोमिनेटर को सेम कर लें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी, तो ये हो जाएगा 2p डिवाइड बाय 2 प्लस p डिवाइड बाय 2, सो दैट वुड बी 3p डिवाइड बाय 2, so that would be 3p divided by 2, and we know that 2q plus q is equals to 3q, so that is our answer. So 3 by 2p plus 3q। समझ आ गई बेटा सबको? Yes, sir. Noor, Hoor and Barira, do you understand this? Now we have p2s vector available, vector हमारे पास available है p2s। सो नाउ एस आर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को लंबा प्रोसेस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, वरना ये बहुत आसान है। आगे क्वेश्चन हम जरा जल्दी जल्दी करेंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं। एस टू आर, ईसा, जी। ईसा कैन यू हियर मी? बेटा लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली, ठीक है? आप एस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है? आपने आर तक जाना है, आपको आर पॉइंट नजर आ रहा है कि वो ये है, ठीक है?
इज दिस क्लियर? जी आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप पहले कौन सा रास्ता लेंगे आर तक जाने के लिए? डायरेक्ट नहीं जा सकते हम लोग। बिल्कुल सर, डायरेक्टली जा सकते हैं एस से स्ट्रेट टू आर। हाँ जी, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? सर मैं अपना बोलूं कि नहीं, जो सही है वो बोलूं? जो आप बोल रहे हैं आप बताएं। सर मेरे साथ तो अगर गाड़ी होगी, मैं एस से जाऊंगा टी पे, टी से जाऊंगा यू से, पर आऊंगा आर पे। वेरी गुड, ये शॉर्टेस्ट तरीका है, एग्री। लेकिन यस क्वेश्चन में हमें टी टी टू यू दरमियान का रास्ता नहीं गिवन, ठीक है? ये जो ब्रिज ठीक है है। ये हमें नहीं गिवन। तो हमारे पास एस टू पी, पी टू क्यू और क्यू टू आर जाना पड़ेगा, एग्री? जी सर। सो इट वुड बी एस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके ईसा, अभी हमने ऊपर पी एस फाइंड किया, अब हमें एस पी फाइंड करना है, एग्री? रिवर्स। तो जब रिवर्स लगाओगे तो ये आपको ये पी एस जो है ना, इसके खाली साइन चेंज करने हैं, ठीक है? तो ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 3/2 p प्लस 3q, तो इसको खाली नेगेटिव साइन कर दो, नेगेटिव साइन -3q। ये हो गया जी एस पी प्लस पी टू क्यू इज 4p इन द क्वेश्चन, नजर आ रहा है हमें, प्लस क्यू टू आर इज 3q, राइट बरीरा? Yes, sir. ओके जी, जरा इसको ओपन करके देख लें। सो -3/2p -3/q प्लस 4p प्लस 3q। अब इनको ऐड करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है? लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें आप लोग। तो -3/2, ओके, एस आर इज इक्वल्स टू -3/2p प्लस 4p -3/q सॉरी -3/2q -3 एक मिनट, जरा मुझसे कुछ गलती हो गई है, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये -3q है खाली। ओके, तो इट इज -3q, अरेंज कर रहे हैं, ओके, -3q q। So we can see that Isa minus हेलो, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अभी आ रही है। यस सर, अभी सही हो। क्यों पहले आवाज लैक हो आवाज लैक हो गई थी क्या? जी जी सर, आवाज भी चली गई थी और जी स्क्रीन सर। भी। अच्छा एक मिनट जरा, मुझे दीजिएगा, अजान हो रही है, एक मिनट जरा मैं डिवाइस लेकर आता हूँ, एक मिनट आप होल्ड करें। बेटा मेरी आवाज में क्लैरिटी आई है कुछ? जी सर, अब आ रही है। नहीं, क्लैरिटी आई, डिवाइस थोड़ी सी चेंज की है। एक सर मिनट वैसे के ही थोड़ा है। खामोश, अजान हो रही है।
अल्लाह अकबर। ओके जी, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था। वी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम ईसा। ईसा से हमने पूछा, ईसा ने कहा कि सर एस आर जाने के लिए एस पी पी क्यू और क्यू आर वेक्टर्स होंगे। ये क्या चीज है हमारे पास? ये हमारे पास ये वेक्टर्स हैं। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ वी एडेड ऑल ऑफ देम। हमने सबको ऐड किया। वी सॉ दिस दैट -3q प्लस 3q कट गए हैं। तो ईसा, हमने आपसे सवाल पूछा कि -3/2 1.5 होता है, ठीक है, 1.5p होता है, दैट इज 4p। तो आपको पता है कि प्लस माइनस इज माइनस, साइन प्लस का आएगा। 4 में से अगर आप 1.5 निकालते हैं तो 2.5 आता है कि नहीं? यस और नो? हूर एंड नूर, कैन यू हियर मी? जी सर। हूर एंड नूर, कैन यू हियर मी? हूर एंड नूर, कैन यू हियर मी बेटा? भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सो 2.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ? और 5/2p, so Yes, that sir, would be you can. 5/2p. Okay, so now they say that state the name of the quadrilateral PQRS using vectors and give a reason for your answer। और आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो नेम हमने देना है इस वेक्टर को PQRS को। so we know that SR जो आ गया हमारे पास, it is 5/2 of p, ठीक है, it is 5/2p। तो इसका मतलब है कि these p to q and s to r they are parallel, so the name of the trapezium is, this quadrilateral is trapezium, this is trapezium because p to q and p to q is parallel to sr for 2 marks। is this clear? Is this clear? यस सर। Now find and simplest form the ratio of p to q vector। तो magnitude of p to q is Hazim। कल हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है जी। सो वी कैन सी दैट Yes. p to q is 4p। क्या होता है जी? 4p. इट इज 4p रेशो। अब हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है एक्स और वाई की। और एस आर इज 5/2p। सो व्हाट इज द रेशो बिटवीन द मैग्नीट्यूड? it's 4/2.5। agree? agree? Yes. What if I divide 2.5 on both sides? So what will I get? I want to simplify this now. Yes. I want to simplify this. So Noor, can I write 4/2.5? No. Sir, आपने बोला नहीं what if you divide both sides by नहीं 2.5? नहीं, अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ठीक है। अच्छा, okay तो sir. सिंप्लीफाई करना, 4 और 2.5 की कुछ ना कुछ कटिंग हो सकती है। एग्री? क्योंकि कर दे ये सर। पेपर 2 का क्वेश्चन, आपको ये पेपर 2 का क्वेश्चन नजर आ रहा है। Yes sir. तो तो इसका मतलब है कि इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होने वाला है। इसकी कटिंग करना आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रफ वर्किंग करनी पड़ती है काफी ज्यादा। तो आपने कैलकुलेटर के अंदर ये दिस 4/2.5 का मतलब है 4 डिवाइड बाई 2.5। राइट नूर एंड Yeah. हूर? Yes, sir. ओके बेटा, जहां पे समझ ना आए वहां पे यस नहीं बोलनी मुझे, अच्छा। 1.6 आ रहा है बरीरा। Yes sir. 4 divided by 2.5, 1.6. Yes, sir. ओके, तो ये मैं इधर इतनी देर कैलकुलेटर लोड हो रहा है मेरे ख्याल से, एक मिनट सब्र करें। सो ये आ रहा है 1.6/1, ठीक है। तो 1.6 रेशो जो है ना, रेशो 1, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराएंगे, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes sir. ओके जी,
सो मैं तभी प्रोसीड करूंगा। नूर, नूर आपको भी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, इन द बिगिनिंग यू कैन सी दैट, आपको ये नजर आ रहा है कि दैट इन दिस क्वेश्चन आपको यू कैन सी दैट दैट f इज इक्वल टू 4 एंड -3, आपको 4 और -3 नजर आ रहा है, एंड g इज इक्वल्स टू 1 and -5. We can see that very clearly. Okay, now in this question you can see that it is g minus 2f. So first of all जरा 2f निकाल लेते हैं। So 2f का मतलब है 2 multiply with f, so that is 4 minus 3. So 2f का मतलब है 2 4s are 8 and that would be -6, तो ये ब्रैकेट में आप बंद कर लें। g minus 2f का मतलब है कि g की वैल्यू लिखें 1 -5 -2, f की जगह पे आप वो वेक्टर लिख लें जो आपने निकाला हुआ है साइड पे, 8 and -6. So the answer is matrices में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 -8 and -5 minus into -6. So it would be, the answer would be -7, minus minus plus, तो रफ वर्किंग में कर लेते हैं, -5 plus 6 is +1. So -7 and 1 is the final answer. तो आपने यहाँ पे लिख देना -7 and 1। बेटा ईसा बार बार जो है ना इसको क्लास सर को लीव ना करें। सर नमाज पढ़ रहा था। ओके, गुड जॉब। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, सर बात सुने। मैग्नीट्यूड, जी जी सर ये जो है सर, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं ना? हाँ, दोनों में आते हैं, लेकिन कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चन नहीं में, ये पड़ती। सबसे अच्छी बात है। और सर ये कैलकुलेटर में नहीं ठीक है, होता? होता है, कैलकुलेटर में भी होता है, वो बाद में सिखाऊंगा। वो सर तरीका सिखाए ना सर, ये क्या लंबा कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले बेसिक सीखें। ओके, ये दो लाइनों का मतलब है ईसा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहते हैं कि शो दैट पेट्रा इज रॉन्ग, वो कहता है, वो कह रही है कि एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो जी से ज्यादा है। तो हम लोग जरा निकाल के देखते हैं। एफ के अंदर ईसा एक्स की वैल्यू क्या है? सर 4/-3। बाय नहीं बोले, सॉरी नीचे डिवाइड का साइन नहीं है। सॉरी सॉरी 4 -3। स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है -3 स्क्वायर। तो इसे ये बताओ कि 4 स्क्वायर 16 आता है जी सर। और -3 का स्क्वायर होता है 9। तो -9 16 प्लस 9 इज -9 नहीं, +9 बेटा, -3 के ऊपर प्लस। स्क्वायर लगा है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्क्वायर जी रूट जी 25 इज 5 यूनिट्स। ओके, अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी का। तो ईसा अब ये बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या है जी में? एक्स, अच्छा जी की है 1 और -5। तो 1 स्क्वायर प्लस इंटू -5 स्क्वायर, एग्री? दैट इज जी इक्वल्स सर। टू 1 का 1 स्क्वायर आता है + 1 और 25। वेरी गुड, तो स्क्वायर रूट 26 आ रहा है ना? जी इसका मतलब है कि इट इज 5 पॉइंट समथिंग, एग्री? समथिंग। सो शी इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज जी का मैग्नीट्यूड जो है ना ज्यादा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। सो पीट्रा इज रॉन्ग। ठीक है, ये हमने शो करना था। ठीक है हाजिम? Yes, sir. ओके जी, लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। सब जरा पे अटेंशन। हूर, नूर और बरीरा, आप लोग तीनों बिल्कुल कंसंट्रेट करें। Okay, OA and B are points with O to A that is equals to small a. O से A तक का जितना भी रास्ता है ये बराबर है स्मॉल a के। ठीक हो गया जी, कलर चेंज। Okay, O to B is small b, so O to B it is small b, ये पूरा रास्ता स्मॉल b के बराबर है। P is the point on OA, we can see that such that O to P is 1/3 of OA. अच्छा जरा everybody please focus. This is O, A line. Everybody, I hope all of you listening me. O to A. Yes, sir. According to the question, this line has 3 pieces. Agree? So for example, let me just split the line with 3 pieces. Can you see that, everybody? We can see that P is at that point of the line, right, Isa? So if that portion is 1/3, so Isa, that portion would be what? सर टोटल कितना है? टोटल 3 पीस है लाइन के, एक ये है तो बाकी वो पीस कितना होगा? P to A कितना पीस होगा? सर 1/2। नो नो नो, थोड़ा सा गौर करें। टोटल देर आर 3 पीसेस। देखो ये एक पीस जो है ना ये 1/3 है, ठीक है।
तो ये दो पीस कितने होंगे? Isn't it 2/3? सर मैंने बोला ना 2/3। आपने 1/2 बोला बेटा। ओ सर वो मैं गलत हो गया था। So it would be 2/3. Agree? Now we can see that P to A is O to P, O to A is small a. So can I say that this is 1/3A and that is 2/3A? Yes or no? Noor and Hoor, do you understand this? Noor, do you understand this? जी सर समझ Yes, गए। sir. Okay. Now the question is from you, Hoor. Hoor, now it's your turn. Find P to B in terms of A and B. You want to start your car from P. This is your starting point. This is your starting. And this is your ending. So tell me the way. कौन सा रास्ता लेंगे P to B जाने के लिए? Come on, Hoor. Turn on your mic. P to O and Very good. then B And to then? B. No. O to B. Yes, You sir. have to go this way and then go this way. Agree? Plus Yes. OB. Okay. P to O is what? P to O is what? 1/3A. No, negative 1/3A. We are going in a wrong direction. Agree, Hoor? Yes, sir. Okay. Plus O to B is what, Hazim? O to B is B. Very good. So that's the answer, minus 1/3A plus B. Right, Isa? Okay. Now we are done with this question. ओके, आई थिंक ये मैंने सॉल्व किया हुआ एक दफ़ा, लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि चलें, इरेज नहीं करते इसको, फिर काम ही आएगा हमारा। ओके, आंसर सामने लिखा हुआ है पहले से। इट सेज दैट O to Q in terms of A and B, O to Q हमने बताना है, तो हमें जरा डायग्राम के लिए पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम पिछले पेज पर है। वी नीड टू टेल O to Q ओनली। ओके, तो O जो है वो मैं यहीं पे करता हूँ ताकि हमें पेज चेंज ना करना पड़े। ओके, O to Q। Okay, we can see that the third line says that OQR lie on a straight line such that Q is the midpoint of PB. Q is the midpoint of PB. It means that these two are half pieces, right? Isa, P to O and O to B half pieces हैं. Agree? हमारे पास P to B आ चुका है, नीचे हमने निकाला हुआ P to B. Agree? So we need to go from O to R. We need to find out OR. So O to R निकालने के लिए what we need? G. We want to go till point R. What we need? AR. Okay, हमें AR की जरूरत है। Okay then, AR के लिए हमारे पास PD भी आ चुका है। ठीक है, हम जरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा उस पेज पे। अच्छा, OQ है, हमने गलत लिखा है वहां पे क्वेश्चन। ओके, इट्स OQ नॉट OR। ओके, इट्स OQ, इट्स OQ। ओके, ईसा, you want to find OQ, what should be your way? ईसा, क्या रास्ता होगा? आप O से गाड़ी स्टार्ट करो, Q पे जाना है, लेकिन रास्ता बताओ। नूर? Sir. Sir, can you repeat? Yes. Can you please tell me what should be the way if I want to go from point O till point Q? What should be the way? OP. Yeah, OP OB. plus PQ. Okay, that's good. It is OP plus P and Q. Agree? We know this OP is 1/3A. It's positive now because we are going this way, OP.
Agree? And P to Q is half of PB. Agree? So we know this PB हमें नजर आ रहा है नीचे. So that would be, इसको जरा नीचे जरा निकल लेते हैं. P to Q is equals to PB डिवाइड बाई 2. तो PB की वैल्यू है हमारे पास 1/3A प्लस B. तो ईसा जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसके साथ नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें. शॉर्टर टेक्निक. So that would be 1/6A plus B by 2. So that would be plus 1/6A plus B by 2. Now we can see that AA is in the like term. So LCM ले लो 1/3 plus 1/6. आप लोग कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हैं 1/3 plus 1/6. तो हमारे पास अगर 6 is the LCM. ठीक है. So यहाँ पे होगा 2 तो ये आएगा 2A plus A plus B by 2. So that would be 3A divided by 6 plus B by 2. That would be 1/2A plus B by 2. Is this clear? So that would be the answer for this Yes. question, that 1/2A plus B by 2. So let's go. देखिए इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ. अच्छा, ये जो आंसर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सिंप्लीफाई नहीं है खाली. ठीक है, तो ये आपने सिंप्लीफाई कर लेना है खाली. ओके, देख लें एक नजर. यार ये 1/6 लिखा हुआ है सब. करें 1/6A plus 3/6B. तो it would be 1/6A plus 1/2B. लेकिन हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट नहीं है इससे. लेट्स चेक. शिट, मैंने सेव नहीं किया. चलें, कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे दोबारा. एक्चुअली मैंने गलती से कैंसिल कर दिया है और अब वो दोबारा हमें करना पड़ेगा. तो क्या ये आप लोग कर सकेंगे दोबारा? Yes, sir. प्लीज डू ट्राई. आई विल सेंड दिस वर्कशीट. मैं वर्कशीट आप लोगों को भिजवा दूंगा ये वाली. ठीक है, ताकि आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कर लें अटेम्प्ट. और ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है इसको आपको मैं करवा देता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें फिर वही पूरा सवाल करना पड़ेगा दोबारा. आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. इसका लास्ट पार्ट ये आप लोग जरा खुद कर लो. ठीक है, ये मैं बाद में दोबारा कर लूंगा आप लोगों के लिए जल्दी से. ठीक है, और हम लोग इसको जो है सॉल्व आउट कर लेंगे. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इसके अंदर, इस वर्कशीट के अंदर वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस. मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर इकट्ठे कर दिए आप लोगों के लिए. फॉर द सेक पेपर 1 पेपर 2 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें एक साथ लगे हुए हैं. सो कोशिश करें कि ज़रा अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो इसका मतलब है कि आप लोगों को काफ़ी जो है इसकी ग्रिप ले लेंगे. ठीक है, और आंसर्स भी आगे लिखे हुए हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो कोशिश ये की है कि IGCSE के क्वेश्चंस भी बीच में डाल दिए कि अगर क्या पता चलता है इस दफा कोई पेपर क्वेश्चन जो है वो IGCSE से एग्जामिनर उठा के देते हैं आप लोगों को. इज दिस क्लियर? तो ये वर्कशीट मैं आप लोगों को भिजवाता हूँ. ठीक है, आप लोग इस वर्कशीट को देखें. और अब बारी है थोड़ा से क्वेश्चंस लेने की. सो बरीरा. Yes, sir. बरीरा, ओके. आपने कहा सर डिड यू चेक द टेस्ट? कौन सा टेस्ट बेटा? सर जो आपने दिन भेजा था ग्रुप में. जी बिल्कुल ठीक. आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक थे. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए थे. ठीक है, वो मैंने देखे हैं. इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे. अच्छा, मेरे फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स जो हैं, ईसा, कौन कौन है सब करें. ईसा, हाजिम एंड मुर्तजा, यू कैन लीव द क्लास. आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं अभी. Thank you so much, sir. ओके सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. ओके ईसा, यू कैन लीव द क्लास एज वेल.